If following models for tax other than income exempt from tax shall be chargeable to tax under the head income from business. The fair market value, the fair market value. The following inclusive also for a tax year other than the following incomes of a person. The following incomes of a person for a tax year other than income exempt from tax shall be chargeable to tax under the head income from business. The following incomes. Acha. The fair market value. ABCD. The fair market value of any benefit. The fair market value of any benefit or purchase, whether convertible into money or not, derived by person in course of or probability of the past present. अच्छा जी ये प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप कह रहे हैं प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप द फेयर मार्केट अच्छा इसकी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स और परचेजेस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स और परचेजेस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स और परचेजेस the fair market value the fair market value of any benefits are purchased whether convertible into money or not whether convertible into money or not okay in the course of past present or business relationship the word benefit includes any benefit derived by a way of waiver of profit on debt or the debt itself under circular scheme issued by the State Bank of Pakistan अच्छा जी any management fee अच्छा management fee any management fee Su- Sukriya yes no hello welcome to my channel welcome
एनी अमाउंट, अच्छा मैनेजमेंट फ़ी, management fee derived by a management company. Okay. Management fee derived by a management company including a Mudarba management company. Management fee derived by a management company including a Mudarba management company. Management fee derived by a management company including a Mudarba management company. Okay. Any amount received or receivable by a scheduled bank or an investment bank, a development finance institution, or Mudarba or a leasing company from leasing out an asset, whether owned by it or not. Any amount received or receivable by a scheduled bank or investment bank. Okay. Bank, investment bank, or development finance institution, or Mudarba or a leasing company from leasing out an asset. एसेट को लीज करने पर जो रिसीव्ड और रिसीवेबल है वो भी चार्जेबल है इनकम फ्रॉम बिजनेस. लीजिंग आउट एन एसेट, बेसिकली लीजिंग आउट एन एसेट बाय बैंक्स, लीजिंग आउट एन एसेट बाय बैंक्स. बाय बैंक्स. ओके. एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. Banking company or non-banking finance company has distribution by mutual fund or private equity and venture capital fund out of its income from profit on debt. Okay. तो ये बेसिकली प्रॉफिट एंड डेट है. यानी कि बैंक्स का जो डेट है उस पर जो प्रॉफिट आया है उस पर वो उसकी इनकम है और वो चार्जेबल है. एनी इनकम रिसीव्ड बाय बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग. ओके. As distribution by a mutual fund or a private equity and mutual fund, private equity, venture capital fund out of its income from profit on debt. Profit on debt, where the person's business is to drive such income. ठीक है. अगर पर्सन का काम ही यही है कि वो प्रॉफिट इन डेट लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. In other cases, it will be chargeable tax under the head income from other sources. Okay. The following amounts are made chargeable to tax under the head income from business under the following provision of Income Tax Ordinance 2001. अच्छा, नंबर 1 पे क्या कह रहा है? एक्सपेंडिचर claimed on accrual basis but not paid within 3 years. Okay. But not paid within 3 years of deduction allowed. Okay. उसके बाद कहता है बेनिफिट ड्राइव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी. Benefit derived in respect of trading liability for which deduction has been allowed. Okay. यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स है कि एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो अक्रूवल बेसिस पे हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं बट उनको अभी पे नहीं किया 3 साल के अंदर अंदर.
तो अगर उसको 3 साल के बाद तक पे नहीं किया तो उसको एज ए इनकम कंसिडर कर लेंगे। अच्छा, बेनिफिट ड्राइव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी फॉर विच डिडक्शन हैज़ बीन अलाउड। यानी कि एक लाइबिलिटी थी आपकी और आपने उसकी डिडक्शन कर ली हुई है, उसकी डिडक्शन अलाउड है आपको। बेनिफिट ड्राइव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी फॉर विच डिडक्शन हैज़ बीन अलाउड। ठीक है। अच्छा, रिकवरी ऑफ बैड डेट फॉर विच डिडक्शन हैज़ बीन अलाउड। अच्छा, ऐसे बैड डेट्स रिकवर हो गए हैं जिसकी ऑलरेडी रिकवरी हो चुकी है, लेकिन अब वो अलाउड हो गए। रिकवरी ऑफ बैड डेट, ठीक है। यानी कि पहले हमने एक्सपेंस क्लेम कर चुके थे उसका और अब वो रिसीव हो गए। ठीक है। तो रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर सब्सिक्वेंट रिकवरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर और लॉस फॉर विच डिडक्शन हैज़ बीन अलाउड। ओके, ये रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर है बेसिकली सारे। यानी कि पहले उनकी हमने एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लिया या लॉस लॉस रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट उसकी रिकवरी हो गई हमें। ठीक है। तो इसको ऐसे एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है। और ये चार्जेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा जी, तो 11 बज गए। अच्छा, उसके बाद कहता है जी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी बिजनेस और एक्टिविटी दैट हैज सीज्ड। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी बिजनेस और एक्टिविटी दैट इज सीज्ड। सेक्शन 72। सेक्शन 72, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी बिजनेस एक्टिविटी दैट हैज सीज्ड। ठीक है, कि जो बिजनेस सीज हो चुका था उससे हमें कोई इनकम हासिल की है हुई है। ठीक है। सीज बिजनेस की सीज्ड बिजनेस जो स्टॉप हो चुका था, क्लोज हो चुका था, सीज हो चुका था, उसकी जो इनकम, वो भी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है जी कंसील इनकम और सुप्रेस्ड प्रोडक्शन। ठीक है, कि इनकम आपने छुपा ली या आपने प्रोडक्शन कम शो की या सेल्स कम शो की और एनी अमाउंट या रिसीट लायबल टू टैक्स। ठीक है, मतलब आपने कोई इनकम छुपाई हुई है, आपने प्रोडक्शन कम शो की हुई है, आपने अपने सेल्स कम शो की हुई है, तो अगर वो पता चल गया तो वो लायबल टू टैक्स है, कंसील्ड इनकम। ठीक है, सप्रेस प्रोडक्शन सेक्शन 11 है ये, बट ये चार्जेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो हमने क्या पढ़ा अब तक कि बिजनेस के हेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो प्रॉफिट्स एंड द फॉलोइंग इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर other than income that is exempt from tax shall be chargeable to tax under the head income from business। ठीक है। सबसेक्शन ए है जी द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय एनी पर्सन एट एनी टाइम इन द ईयर। ठीक है, कि कोई भी बिजनेस है उससे प्रॉफिट या गेन हासिल किया है हमने। ठीक, ये सबसेक्शन ए है। उसके बाद है जी जो एसोसिएशंस है वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करती है, जैसे हाउसिंग अथॉरिटीज़ है, हाउसिंग एसोसिएशंस है, तो ये भी चार्जेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है। उसके बाद हायर और लीज एग्रीमेंट है, और वो किसका जी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टीज का। ठीक है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ ए बिजनेस। नंबर 2, प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएशंस एसोसिएशंस। ठीक है, सोसाइटीज़। उसके बाद हायर और लीज है। उसके बाद कहता है जी बेनिफिट्स है किसी पास्ट प्रेजेंट या प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप से, उससे जो इनकम हासिल हुई है। फिर जो मैनेजमेंट फ़ी है, जो मैनेजमेंट कंपनी है लाइक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है, तो उसकी जो है वो आमदन वो भी टैक्सेबल है।
उसके बाद बैंक्स जो लीजिंग का काम करते हैं, उसकी जो अमाउंट रिसीव या रिसीवेबल है वो भी। उसके बाद जो है वो बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग कंपनी जो फाइनेंस देते हैं उन पर उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो भी है प्रॉफिट ऑन डेट। जो वो जो कर्जा देते हैं, डेट देते हैं, उन पर जो उनको प्रॉफिट मिलता है वो भी चार्जेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, उसके बाद है प्रॉफिट ऑन डेट वेयर द पर्सनस बिजनेस इज टू ड्राइव सच इनकम, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन अदर वे कैसे इट विल बी चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ऐसा बंदा जिसका काम ही कर्जा देना है, तो ये उसकी जो इनकम है वो चार्जेबल होगी अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद कुछ और इनकम्स भी हैं, जैसे एक्सपेंडिचर हमने क्लेम कर लिए हैं बट पे नहीं किए, लाइबिलिटीज़ डिडक्ट कर ली हैं, पे नहीं की, उसके बेनिफिट्स हासिल कर लिए हैं। उसके बाद बैड डेट से रिकवर हो गया है, हमने पहले ऑलरेडी उसको उसको एक्सपेंस आउट कर लिया हुआ है, डिडक्ट कर लिया, अलाउ है, हमें अलाउ हो चुके हैं। उसके बाद रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर। रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर के पहले हम ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं कि जो हम पहले उसको अपनी अपनी एक्सपेंडिचर या लॉस रिकॉर्ड कर ले होते हैं, यानी कि हमें डिडक्शंस अलाउ हो जाती हैं। लेकिन अब हमें रिकवर हो गए, तो ऐसे ऐसे एक्सपेंडिचर या लॉसेस को रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद था कि अगर कोई बिजनेस सीज हो गया तो उससे जो इनकम हासिल होती है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में है। कंसील की हुई है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है डिडक्शंस एडमिसिबल, सेक्शन 20। In computing the income of a person chargeable to tax under the head income from business for a tax year, a deduction shall be allowed for any expenditure. अच्छा, यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है एनी एक्सपेंडिचर। कहता है इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर अ टैक्स ईयर, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकर्ड बाय द पर्सन इन द ईयर, कि उस साल में वो इनकर हुआ हो, होली, मुकम्मल तौर पे, एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, और ख़ास तौर पर वो एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल हुआ हो वो खर्चा, तो ऐसे खर्चे को हम इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं, किसी भी किस्म का ऐसा खर्चा। Muhammad has sent you another 4200 on stream. Is it possible? $42,000? You are joking. You are kidding me. Mona Mohammed. Mona Mohammed. Welcome, Mona Mohammed. Thank you. If you have sent me, is it real? I don't know what's going on. Mona Mohammed, where you from?
ओके, ठीक है। डिडक्शन अलाउ है फॉर एनी एक्सपेंडिचर इफ इट incurred by the person in the year wholly or exclusively. Okay, if the aforesaid expenditure is incurred in acquiring a depreciable asset or an intangible asset with a useful life of more than 1 year is pre-commensurate expenditure. Then the person must depreciate or amortize the expenditure in accordance with the section 22, 23, 24 and 25.